star. That means Raju live in the Vasai village of the Idar district. In the month of the October, like every year, my father is preparing the field to sow the onion crops. What the father do in the October month? They have to prepare the sowing the seeds and they look after their land of the farm. There are so many things to done this at time. That means in the October month they have to see so many works, right? They have to do so many works. I am also going to farm to help him, and Raju also help to their parents. From the last few days, my father has been using the axe to dig the soil. The father of the Raju used the axe. You see the axe? What is the axe? That means you have to dig the ground and make it the earth softer and smooth. So Raju's father dig the ground and make the earth softer and smooth. Okay. Now sowing the seeds. What are the Raju and his father doing? Also my father will sow onion seeds in the field. What crops they have to going to sow? It is sowing the onion crops. Now the bullock will plow the field. What are the first you do? First the Raju's father tie the bull to the plow and make it the stock, farm stock, firstly in the farm of the Raju's field. Okay. Now and the Raju's father plow the field and walk behind the plow, sowing the seeds, and then after some distance they sow the seeds. I would also like to do same like my father. And what the Raju do? Raju also do the sowing the crops with the father. They have to learn how to sow the crops, right? But the father says that it is necessary to drop the right amount of the seeds at a regular distance. When the seeds is sown, it is necessary to maintain the distance of the seeds. Raju is the little one, so they don't have to maintain the distance. Some place they spread the more seeds, some place they don't spread the seeds. But the Raju's father taught how to sow the seeds at the different place and different distance. This is not so easy. It is not very easy. He says that I may drop too many seeds at the one place. Then what the Raju doing? Raju doing the spread the seeds at the one place. I must wait till I am the little older, be able to do this properly. When the Raju is grown up, then that should be comes in the practice. है ना? उसके पापा ने ऐसा बोला कि it is not easy. ये जो सो करना है, मतलब सीड्स डालना है, वो easy टास्क नहीं है. रेगुलर डिस्टेंस पे थोड़े थोड़े सीड्स डालने पर, राजू छोटा है तो राजू से क्या होता है, वो एक जगह पे सारे सीड्स डाल देता था. एक जगह पे एक सीड्स डालना होता तो वो 3-4 सीड्स उससे डल जाते थे. तो वो राजू बोल रहा था कि जब मैं बड़ा होगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा, तब जाके मेरे से भी मेरे पापा के जैसा होगा. राइट. द सप्लिंग सीन. और उसके बाद क्या होता है? नाउ इट इज नाउ 20 days since the seeds have been sown. How many days taken by the onion seed? Onion seed taken the 20 days. 20 days के बाद थोड़े थोड़े स्प्राउट उसमें से निकल आते हैं. The onion seed have started to germinate. और 20 days के बाद onions के seeds germinate होने लगते हैं. Along with the onion plant, weeds have also come up. When the onion seeds has to sprout, around this weeds also come out. Weeds क्या होता है children? Weeds is a unwanted waste grass. जो क्रॉप्स के आसपास में अनवांटेड काम का नहीं होता है. अनवांटेड मतलब जो काम का नहीं होता, वो जो ग्रास है वो क्रॉप्स के आसपास उग जाता है. Weeds grow in the field and the gardens without being planted.
और बीड्स हम प्लांट नहीं करते, उसको ग्रो नहीं करते, पर तो भी अपने आप वो उग जाते हैं। तो when weeds is grown then we have to remove the weeds, हमको weeds को remove करना होता है। If the weeds are not removed then the crops plant will not be healthy। अगर हम weeds plants को निकाल नहीं देंगे तो उसके अंदर जो क्रॉप्स है वो हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि हम उसके अंदर वाटर डालेंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे, तो वो अनवांटेड प्लांट जो है वो भी उसमें से ले लेगा, और जो क्रॉप्स है उसको इनफ प्रोपोर्शन में वाटर और फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। इसलिए हमको वीड्स प्लांट को निकाल देना पड़ता है। मदर, अंकल एंड आई वी ऑल हेल्प फादर टू रिमूव द वीड्स। और वीड्स को निकालने के लिए मेरे अंकल जो है, मतलब राजू के अंकल, फादर, उसकी मम्मी, सब एक दूसरे को हेल्प करके वीड्स निकालते हैं। नाउ आफ्टर ग्रोइंग द प्लांट्स आई एम हैप्पी टू सी द क्रॉप्स ऑफ द ऑनियन। और थोड़े दिन बाद ऑनियंस का क्रॉप्स उग जाता है और राजू देख के बहुत खुश हो जाता है। दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नी। और कहाँ तक पहुंच जाता है? राजू के नी तक, है ना, और नी मतलब घुटने तक पहुंच जाता है। The leaves have started turning yellow and drying up। उसके बाद जो leaves है वो थोड़े येलो हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं। This means that the onion are ready to harvest। That means the crops we have to uprooted from the soil। What is the meaning of the harvest? Harvest means the crops is uprooted from the soil। जब ऑनियन के लीव्स येलो कलर के हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो उसको जमीन में से निकाल देना चाहिए। I will be harvested and Raju also do the harvesting work। Now everyone at home will have to work to harvest the onion out। और जो फैमिली मेंबर्स है सब ऑनियंस के क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। It is very important that should be done at the right time, but when the onion crops is harvested, it is the important to do at the harvesting at the proper time। Why? If the proper time is not, we have to harvest the onion crops, it may be rot, it is the spoil in the land also, right? If we are late, the onion will rot in the ground and itself and our hard work will be wasted। अगर ऑनियन क्रॉप्स को टाइम से हम हार्वेस्ट नहीं करते, जमीन में से नहीं निकालते, तो वो जमीन के अंदर ही खराब हो जाता है और जो फार्मर है उसका पूरा जो टाइम है वो बर्बाद चला जाता है, उसके हाथ में ऑनियंस आता नहीं है। तो जब उसके जो लीव्स है वो ड्राई हो जाए और येलो कलर के हो जाए, वही राइट टाइम है ऑनियन क्रॉप्स को जमीन में से हार्वेस्ट करने के लिए। ओके, राजू हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड। राजू उसके पापा को फील्ड में हेल्प करता है। डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क? क्या आप अपने घर में आपके एल्डर्स को हेल्प करते हो कुछ काम करने के लिए? और कौन सा काम है जो आप अपने एल्डर्स को काम करने में हेल्प करते हो, है ना? उसका लिस्ट आपको बनाना है। नाउ एवरीवन एट होम इज हैप्पी। सब घर में बहुत ही खुश थे। This time the onion are big and of good quality। और इस टाइम पे ऑनियंस जो है वो बहुत ही बड़ी बड़ी और गुड क्वालिटी की ग्रो हुई है। मदर एंड आंटी यूज द एलीज। व्हाट इज द एलीज? एलीज इज अ वन टाइप ऑफ द वेपन टू रिमूव द ड्राइड लीव्स, राइट? तो आंटी एंड द मदर ऑफ द राजू both are the using the elige to cut out the dry leaves of the onion। The elige is sharp and you have to be careful not to cut your fingers। Now elige is very sharp, so we have to take care you do not cut your fingers, right? Father and uncle fill the sack with the onion, and what the father and uncle do? All the onion when the elige will remove the yellow grass, then after filling the sack। sack मतलब बड़े बड़े जो sack आते हैं ना, हाँ, उसके अंदर पापा और जो उसके अंकल है राजू के, दोनों उसके अंदर फिल करते पूरी ऑनियन को। फादर विल टेक देम
sell them in the big market. And then after राजू के पापा क्या करते हैं, ट्रक के अंदर उसको ले जाते हैं और मार्केट के अंदर उसको लेके बेचते हैं. राइट. Here is the picture given of the some instrument which is the used by the farmer to harvest the crops and to show the crops. Okay children, then you understand how the onion crops grow. Yes, now the onion crops grow after the taking the 1 or 2 months. Look at here, this is the workbook and choose the correct word. We have to do the choose the correct word. Which implement is used to plow the field? In this lecture, I have told you the plow is plowing the field and the bullock is tied with the plow, and then after further walk behind the plow and all the land is the smoothen and very soft. So which implement we use? It is the plow. So underline below the plow, and here we have to write the option A. Now second number, which implement does Raju's father use to loosen the smooth soil? Which implement use? It is the axe, a spade, a pickaxe and slate. So it is the pickaxe. Raju's father used the pickaxe and we have to write the here C option. Okay. What is the unnecessary grass that grows along with the good crops known as? What is the unwanted grass grow? It is called the weeds. So we have to underline below the weeds and write here the D. Which of the following crops grows underground? It is the cabbage, cauliflower, onion, brinjal. Which crop is grown under the ground? It is the onion. So we have to write, underline below the onion and write here the C. How can we say that the onion crops is ready to be harvested? आपको कैसे पता चलेगा कि अब ऑनियन के क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया? The leaves look loose green. जब उसके leaves ग्रीन कलर के दिखाई देता, the leaves become dry and yellow. उसके जो leaves है वो dry हो जाए और yellow हो जाए तब the plant bend down. Plant जब झुक जाए तब the plant fall to the ground. Plant जमीन पे गिर जाए तब no, the leaves become dry and yellow. So here we have to write the option B in the bracket. Right? Now 6 number, which implement does the Alice look like? Alice look like the which implement? It is the pickaxe? No, it is the plow? No, it is the slate. Slate is the look like a Alice. Right? Now here match the following. First number wheat, second millet, third pickaxe, fourth wattle ground. And here is the dig the ground, a creeper, winter crops, monsoon crops. Okay, now first one is the wheat. Wheat is a winter crops. Wheat क्या होता है? Winter का crop होता है. Now millet, millet is the monsoon crops. Millet is the monsoon crops. Pickaxe, pickaxe is to use to dig the ground, right? And wattle guard is the creeper. Okay, students? Okay, now today we discussed about the chapter of the onion crops, how to crops be cultivated, and it is the base season is the October. Okay, students? Now, bye bye.